हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। एंड फॉर द फर्स्ट वीडियो आई हैव चोजन अ टॉपिक which is the most important topic in our lives right now. The first or your new session is on the horizon, and with every new session, with every year, we mark ourselves with new goals. हम लोग नए गोल्स बनाते हैं, नई अचीवमेंट्स को अचीव करना चाहते हैं, but there is always something which stops us from doing it. At the end of the year, we always find ourselves short. Now, basically, what is the reason for it? The major reason for it is your mobile phone, right? So today, the main topic of our discussion is going to be the mobile phone. Now, why is it so that I've chosen this topic? I've chosen this topic specially because the new session is starting. Many a times I've seen and I've noticed the parents struggling with it. So the first problem that the mobile phone causes is the lack of focus. सबसे पहला काम, सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में है वो हमारा फोकस है। हमारा फोकस इतनी जल्दी खराब होता है और हमारा ब्रेन पता नहीं क्यों इससे जब स्टिक हो जाता है तो वो बाकी कुछ सुनता ही नहीं है। इवन इफ आपकी मम्मा अगर आपको पानी लाने के लिए बोलेगी तो आप तीसरी बारी में पानी लेकर आओगे, पहली बारी में नहीं। बिकॉज पहली बारी में आपका ध्यान आपके मोबाइल फोन में। अब होता क्या है इससे? सबसे पहले तो वो आपका रिलेशनशिप खराब करता है आपके पेरेंट्स के साथ, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बी विद देम। द ओनली थिंग दैट यू वॉन्ट टू बी विद इज योर मोबाइल फोन. It has become a severe addiction for you. पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, स्टडीज, सब कुछ सेकेंडरी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, सर हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन नंबर नहीं आते, बहुत ध्यान लगाते हैं, स्कोर नहीं कर पाते। कैसे कर पाओगे? when with every 5 minutes you have to check your mobile phone. In every 2 minutes you need to see who has messaged you. So your main focus is not on your studies, is not on your book. Your brain is working with the mobile phone. Your brain is sticking to it. वो ध्यान वहीं पर है कि नेक्स्ट किसका मैसेज आने वाला है, और आप लोग इस चीज को हमेशा इग्नोर करते हो। ये वही चीज है जो एक्सीडेंट्स कॉज करता है। ये वही चीज है जो कि आप लोगों को एक सक्सेस से एक फेलियर बनाता है। ये वही चीज है जो आपके पेरेंट्स को ये बताता है कि नहीं, आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये मोबाइल फोन है। व्हाट एल्स डज इट डू? और क्या करता है मोबाइल फोन? सबसे पहला ये काम करता है दैट इट बिकम्स योर ट्रू टीचर. How does it become your true teacher? Because you start believing everything what the mobile phone says, what you watch on the mobile phone, the kind of people that you follow, the kind of videos that you watch, the kind of people that you hear talking, the image of the elders, first of all, the respect of the elders. Everything goes out of the window because you have been addicted to the core, right? You stop listening to them. You stop treating them wisely. You stop treating them like they are your parents. That should be the basic thing, right? हम सबके लिए सबसे ज्यादा बेसिक क्या होना चाहिए अपनी लाइफ में कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, जो वो बोलते हैं उसको सुने, उसको समझे और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फॉलो करें, राइट? बट वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगेन द सेम रीजन. Now, what about the parents? This was all about the students that I was talking about, or the children. Now, what about the parents? Parents कहाँ गलत है? मेरे हिसाब से, and all the people who are teaching or who are their elder and who are wise and who knows what the real problem is, they all will tell you that everything starts with the parents. जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम लोग उसे चुप कराने के लिए एक मोबाइल फोन पकड़ा देते, उस टाइम पर जिस टाइम पर उसको सबसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत है. आई हैव राइट नाउ सीन ऑल द फैमिलीज डूइंग द सेम. एवरीबडी, बच्चा रो रहा है, आप कुछ मत करो, आपको अपने काम से मतलब है, आप उसको एक मोबाइल फोन पकड़ा दो एंड दैट्स इट. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म.
Do you know what is it doing to your child? It is making him mad. वो पागल बना रहा है उनको. I have watched many a videos on the internet where children are screaming just because उनके हाथ से मोबाइल फोन ले लिया गया. They are throwing things away just because उनके हाथ से वो लैपटॉप और iPad ले लिया गया. Just imagine small children scratching their parents, hitting their parents, screaming at them. सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की ही है. और आप लोग उनको पढ़ा किस चीज के लिए रहे हो? Why did we study? Why did our parents make us study? हम लोग किस लिए पढ़े? To achieve something in life. And what are the achievements? Achievements कैसे काउंट होती हैं? Material चीजों से. Right? How would you say that somebody is successful? Once they have achieved something, once they have achieved the material things, तभी तो वो सक्सेसफुल है. जब किसी ने एक गाड़ी ले ली वो सक्सेसफुल है. जब किसी ने अपना घर बना लिया वो सक्सेसफुल है. जब किसी ने अपने पैसे से मोबाइल फोन खरीद लिया वो सक्सेसफुल है. दैट इज वेयर सक्सेस इज. एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप आईफोन्स एंड एवरीथिंग खरीद के नहीं देते हैं. दैट शुड बी देयर अल्टीमेट टास्क. वो उनका अल्टीमेट एम होना चाहिए. इसलिए वो पढ़ रहे हैं. आप लोग तो उन्हें पहले से खरीद कर दे देते हो. वो क्यों पढ़ेंगे? दैट शुड बी देयर टारगेट. That once I'll pass the school, once I'll pass the college life, once I'll get into the job. So what should I strive for? I strive for these things. This will be my target. Now what will be the target? Now tell me. What should be the target for the child? जो टारगेट होना चाहिए था वो तो आपने उसको हैंड ओवर कर दिया, लेकर दे दिया ऐसे. तो वो किसके लिए पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा? Everybody right now, all the children, the only thing that they are doing is a show off. And you, the parents, are the core of it. You are the reason behind कि वो बच्चा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने मोबाइल फोन को देता है. उसके पागल होने की मेन क्या रीजन? द ओनली रीजन इज द पेरेंट. एंड पेरेंट इज बिकमिंग हेल्पलेस राइट नाउ. क्योंकि जब तक उनको ये रियलाइज होता है व्हाट दे हैव डन, द वाटर हैज पास द ब्रिज. पानी निकल गया आपके नीचे से. अब कुछ नहीं हो सकता. अब लेकर जाओ उनको पागल खाने में, ठीक कराओ. करा सकते हो तो. There cannot be a solution once this addiction has taken over your child. पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारी तो सुनता नहीं है जी. तो किसकी सुनेगा? आप पेरेंट हो. बच्चा किसकी सुनेगा? मोबाइल फोन की, क्योंकि वो उसी की सुनता है. Now to all the children who are right now appearing for the board examinations, many of them are my students. Still I see them while studying, the boards are there on their heads. Still I see them. As soon as they leave their books and notebooks, the first thing that they want to grab upon is a mobile phone. उन्हें खाना नहीं खाना है, उन्हें मोबाइल फोन देखना है. अब करना क्या है? How should you people come out of it? So this is for all the children who are there in 9th standard to 12th standard to their colleges and everywhere. The first thing that you need to do, if you need to achieve anything in your life, first of all, अगर आप लोगों ने एक दुकान खोलकर उसके ऊपर बैठना है तो that is not called as an achievement. Don't count it as an achievement, right? The first thing, if you want to become something, if you want to be called as learned, right, make sure you put an end to the use of this. इसको उठाओ और एक ऐसे कॉर्नर में रखो जहां से आपको इसकी जरूरत सिर्फ तब पड़े जब आप घर से बाहर जाओ. When your parents need to know where you are, how are you doing, are you safe enough? That's it. Apart from there is no particular use of this mobile phone.
नाउ कमिंग डाउन टू द पेरेंट्स के लिए द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल यू इज learn to say no. Make sure whenever your child is asking for it, learn to say no. आप मना करिए उसको. तो हो सकता है कि वो खाना ना खाए, तो मत खाने दो, चिल्लाए, जरूरत पड़े तो एक दो लगा भी सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें. एवरीबडी सेज कि ऐसा नहीं करना होता, नहीं, बिल्कुल नहीं करना होता है. यू आर द पेरेंट, यू हैव ऑल द अथॉरिटी टू डू इट. Now many a times during our school hours, many parents come to us, right? सर हम ऐसा कैसे कर दें, हमारी तो सुनता नहीं है, कल को कुछ कर लेगा तो हम क्या करें, कर लेगी तो हम क्या करें. वो सिर्फ आपको डरा रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले हो. They also love this life and they want to enjoy this life, and you are the one who's getting scared and letting them do whatever they want to do. And at the end of the day, you are the one who's going to be the victim of it. A child came to me one day, right? I remember 2-3 years back, and it was the very beginning of his 12th standard. He was not a very great student. I mean, not a very bright student, and he was just an average student in his 11th standard. So he came to me and asked me, "Sir, I want to do very well in 12th, right? Why? Because I have to join Indian Army." So I said, "Fine, that there is no problem. You can work hard, you can do it." He said, "I cannot concentrate. I I just cannot concentrate. Every time I try to concentrate, there is one or another message on my mobile phone, and I cannot get away with this." He said, मेरी मम्मा ने मेरे से मोबाइल फोन ले भी लिया, मैंने अपने आप से उनको दे दिया, रख भी दिया, स्टिल मैं आई कुड नॉट रेजिस्ट इट. सो व्हाट शुड आई डू? आई सेड फाइन. दैट 21 डे चैलेंज जो हम लोग सब लोग करते हैं आजकल, 21 डेज तक कुछ नहीं करोगे तो यू विल गेट टू इनटू द हैबिट ऑफ इट. मैंने उसको ऐसे ही वो बता दिया, मैंने कहा 21 डेज यू नीड टू रेजिस्ट, राइट? So it was the month of July, I guess. In August, he decided to dump his mobile phone absolutely. At the end of the year, the boy passed his final examinations. He was a commerce student. He passed his final examination with a percentage of 96.3%. He came to me after the final exam and thanked me for it, for those 21 days that I gave him. Now, many of the parents, right, have a lot of money. Some of you are businessmen. Some can be a bureaucrat, or some might be doing a very high paying job. And then you'll see this video, you'll see me talking, and you'll say, okay, we can provide that for our child. So why should not we? That is our responsibility. We will handle it. What do you have to do with it? Even if you are the richest man on this planet, even if you are the richest man on this planet, do you want to make him mad? They are going to be lunatics. Imagine that state. They will not be listening to you. They will be listening to this monster that they are carrying in their pockets. So parents, make sure you take strict actions against this. Change yourselves. The first thing that you need to do is change yourself. Then only there can be a change in the attitude of the children. Now, as we are going to end the video, I would like your views. मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और आप लोगों का क्या व्यू है इस बारे में. ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे सारे के सारे. बीइंग अ टीचर, जो मैं नोटिस करता हूँ डेली लाइफ में, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्यूज पता चलते हैं, और हमें पता है कि कमी कहाँ है, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं. तो ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स इसको सुनेंगे और इस मैसेज से कुछ बेटर कर पाएंगे. तो इसी तरह के और टॉपिक्स इन फ्यूचर भी हम लोग करने वाले हैं. सो फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स,
I am going to keep making such videos. So make sure you subscribe, like and do comment on the video. कैसा लगा आपको? Thank you so much. God bless you all.